Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a poem named My Neighbor Friend Breathing His Last. This poem was originally written by Bulle Shah in Punjabi language, and then it was translated into English because of its theme, which is universal in every respect. In this poem, Bulle Shah talks about death and death of a friend and its impact on his own mind. When Bulle Shah sees one of his neighbor friend dying, he feels terrified, and he has described that terror and the solution to come out of that terror or to cope with that terror. He is of the point of view that if people living in this world start loving God, then death becomes a bearable reality for them. Otherwise, it is a very terrible reality for people living in this world, because when they see death around, when they see their friends dying because of different reasons, they cannot make sense why human beings were created and why they lived for a particular span of life on this earth, and why they finally died. The solution Bulle Shah has presented is universal. As far as students are concerned, students are taught language through text. All wanted from them is to understand the text, whether the text is in prose or whether it is in poetic form, and then demonstrate their comprehension of that text. This is the demand from the students. That's why examination checks this ability of the students, whether they have understood a text or not completely. There are different methods of checking the comprehension of a poem. Students may be asked to explain a few lines with reference to the context, because in poetry has vast meanings. Poetic lines have vast meanings. A single line needs to be explained in perhaps more than one page. That's why poetry is a more comprehensive sort of language. It says little, but it means a lot, and students are required to understand what the poet says as well as what the poet means. Similarly, there are other things which can be asked, like you cannot understand any piece of literature unless you understand the vocabulary in that piece of literature. Other mechanics which are used to write a poem or to write a line of verse should be understood, but in our country, students who are studying English at intermediate level, this advanced skill is not required. Only what is required is that student will read a poem, they will understand what the poet has said and what the poet meant, and of course this cannot be done without difficult word, without understanding difficult items of vocabulary. Okay students, let's study this poem. This poem starts in a very interesting way. My neighbor friend breathing his last. What should I do, O God, aghast? He is to leave, now can't remain, companions ready to catch the train. What should I do, O God, aghast? In the first stanza, the poet has talked. The poet is talking about the death of his friend. अपने दोस्त की मौत के बारे में जो है वो बात कर रहा है कि वो अपने आखिरी जो है वो सांस जो है वो ले रहा है.
ये उसका जो आखिरी सांस लेना है वो शायर में खौफ के तासरात को पैदा करता है, खौफ पैदा करता है। वो नहीं, उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो अल्लाह ताला से हेल्प मांगता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हूं, उसे मरते हुए देखो। ही इज़ टू लिव नाउ कैंट रिमेन, यानी अब उसने जाना है, रह नहीं सकता, उसका वक्त जो है वो आ गया, दुनिया में उसका वक्त जो है वो पूरा हो गया। कंपेनियंस रेडी टू कैच द ट्रेन। अब दोस्त, इसमें पैराडॉक्सिकल मीनिंग इस लाइन के हो सकते हैं। ट्रेन कैन बी द व्हीकल्स विच people will take to go away after they have buried their friend, यानी वो रिलेटिव्स, रिश्तेदार जो है वो इकट्ठे हुए हैं, वो तैयार बैठे हुए हैं कि ये मरे और इसे दफना के हम लोग अपने काम में मसरूफ हो। दूसरा ये कि लोग जो है वो उसका जनाजा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जितनी जल्दी जो है वो मर जाए, हम जनाजा दफना के दुनिया के कामों में दोबारा से मसरूफ हो जाए। अब ये एटीट्यूड जो है वो लोगों का शायर में खौफ पैदा करता है और वो अल्लाह ताला से हेल्प मांगता है, अल्लाह ताला से कहता है कि मैं जो है वो क्या करूँ। On every side a decamping talk, at every place are shrieks in stock. What should I do, O God, aghast? अब अगेन यहाँ पे जो है वो अगर इन 3 लाइनों में आप जो है वो देखें क्या है कि हर कोई जो है वो मौत की बात कर रहा है। और ये नेचुरल सी बात होती है, जब लोग जो है वो किसी मरने वाले के पास बैठे होते हैं तो लोग मौत की ही बात कर रहे होते हैं, या मरने के बाद उसकी ताज़ियत के लिए जो लोग आते हैं वो सारे के सारे जो है वो मौत की बात करते हैं। न्यूज़ मिलती है, फलां मर गया, फलां भी मर गया, फलां भी मर गया, उसके साथ ये हुआ, वो हुआ। तो इससे और ज़्यादा जो है वो खौफ पैदा होता है सेंसिटिव पीपल में। एट एवरी प्लेस आर शरीक्स इन स्टॉक, यानी रोने की आवाज़ें हर जगह से जो है वो आ रही होती हैं। व्हाट शुड आई डू गॉड अगेंस्ट, मैं क्या करूँ अल्लाह, मैं खौफज़दा हूँ। फ्लेयर अप फ्लेम इन हार्ट टू हाइट, फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट। अब यहाँ पे शायर जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाता है। वो देखता है कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है। वो कहते हैं कि इस आग को दिलों में जला दो, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है जला दो। कौन सी आग है? ऑफ कोर्स खुदा की मोहब्बत की आग है। फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट, क्योंकि अब और कुछ भी दिलकश नज़र नहीं आता। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगेंस्ट, मैं क्या करूँ, मैं जो है वो खौफजदा हूँ। विदाउट हिज लव बुला इन लॉस can hardly dwell here or across. What should I do, O God, aghast? This is a concluding stanza of this poem. यहाँ पे शायर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन दिया है दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए। अगर हम खुदा से नाता तोड़ लें और ये समझना शुरू कर दें कि इंसान भी दूसरी मखलूक़ात की तरह से एक मखलूक है जो एक वक्त पर पैदा होती है और एक वक्त पर मर जाती है, तो ज़िंदगी की कोई सेंस नहीं बनती। और जब ज़िंदगी की कोई सेंस नहीं बनती, इससे बहुत ज़्यादा खौफ के तासरात पैदा होते हैं, ज़िंदगी में मीनिंगलेसनेस पैदा होती है। लेकिन अगर जो है वो खुदा पे यकीन किया जाए कि खुदा ने हर चीज़ को जो है वो पैदा किया है, उसका एक ख़ास मकसद है इंसान को इस कायनात में भेजने का, तो ज़िंदगी इस यहाँ पे भी बामतलब बन जाती है। और आने वाली मौत के बाद वाली ज़िंदगी भी, जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है, आखिरत का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ जो है वो आखिरत की ज़िंदगी भी मीनिंगफुल बन जाती है। इंसान इस ज़िंदगी को उस ज़िंदगी की बेहतरी के लिए गुजारता है और इंसान जो है वो समझने लग जाता है कि ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है, यानी यहाँ पे हम काम करेंगे और हमें हमारा रिवॉर्ड, हमारा जो इनाम है वो बाद वाली दुनिया में मिलेगा। अगर जो है वो ये एटीट्यूड नहीं है तो इंसान के पास जो है वो क्या रह जाता है, इंसान के पास सिर्फ खौफ रह जाता है, डर रह जाता है और उसके पास कन्फ्यूजन रह जाती है, बिवाइल्डरमेंट रह जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी पोएम है, मैंने आपको बता दिया कि आपसे जो है वो किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और इस पे आपको मुसलसल जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इज developing speaking capability, because whenever you will be appearing for some interview after you have completed your education or while you are in the process of your education and you are looking for some job or for some placement or for some other purposes, you will be interviewed and your interview will be mostly in English language. That will be a sort of a gateway to enter into a future, whatever sort of future it is.
You should develop the capability of speaking English, and it is not difficult to develop the capability of speaking English, because if you are speaking just a single sentence and you keep on working on speaking a correct single sentence and you take a week for it, it is okay, and you can go on working hard and increasing the number of sentences which you can speak continuously. Once you start, you have started speaking for 2 or 3 minutes continuously, you have done, I think you have done all the hard work, and now you are ready for the reward which you should get. This is very simple, it is not difficult. You will have to start from somewhere. ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं जो है वो आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा। अगली पोएम करेंगे हम इंशाल्लाह कल, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आप जो है वो मेरे चैनल एडमेट पब्लिक को यूट्यूब पर लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो इसके बारे में बताएं।